Yes, we start the session now. Good afternoon, respected all. I am Dr. Pooja Verma, working as an assistant professor in education department at Mangalam University. I welcome you all to the valedictory session of 1 week FDP on new reform in higher education with reference to NEP 2020. This FDP is being organized by Mangalam University, IQAC, School of Basic and Applied Sciences, School of Education in collaboration with Council for Teacher Education Foundation, Delhi NCR chapter from 27 July to 2nd August 2022. I hereby proudly say that we have successfully completed 7 days of FDP. This is because of the support of each one of you that we have reached this point. Each day of FDP brought some new learning. We had 7 speakers for 7 sessions. The inaugural session was addressed by Professor C.D. Sharma sir. All the speakers hold expertise in their respective academic areas. 868 registrations were received from FDP. Through the number of participants who actually attended, it was low. Though the number of participants who attended it was quite low. Another thing that I want to bring to your notice is that around 300 participants attended the session each day throughout the FDP through Zoom platform and Facebook Live. So if we go day-wise, when we talk about inaugural session, that is day 1, Professor C.D. Sharma, former chairperson in NIOS, professor in School of Education at IGNOU, addressed the inaugural session held on 27 July 2020 as chief guest. The topic for the session was Principles and Approaches to the Implementation of NEP 2020 for Reform in Higher Education. The welcome address was given by Professor Satyendra Gupta sir, Professor Dr. Satyendra Gupta sir, chairperson CTEF, Delhi NCR chapter. The special address was given by Professor C.S. Dubey, Vice Chancellor Sir of our university, Mangalam University. The key highlights were the reforms that were introduced in NEP 2020. When we go ahead to day 1 and session 1, so when we talk about day 1, first session held on 27 July was addressed by Dr. Amit Ahuja, School of Education, Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi. The topic for the session was holistic and multidisciplinary education. The key concepts covered were elements of holistic development, models of holistic education, teaching strategies, and their merits. He discussed the importance of multidisciplinary education and various skills developed through it. When we talk about day 2, that is session 2, Dr. Khushvinder Kumar, Principal Multani College, Patiala, Punjab, addressed the second session held on 28 July and deliberated on the topic professional development and capacity building of teachers. He focused on the planning and implementation of capacity building and professional programs in the light of NEP 2020, UGC regulations, SDG goals. He emphasized on the teachers to be lifelong learners and develop digital skills, holistic pedagogy for learners. When we head towards session 3, Dr. Preeti Chitkara, Head PR and International Relations, KIT, Group of Institution, Delhi NCR, Ghaziabad, addressed third session held on 29 July, deliberated on the topic internationalization of higher education. She focused on planning and implementation of exchange program, twinning program in the light of NEP 2020. She emphasized on the importance of globalization in education sector and how India can become a destination for foreign students. When we head towards day 4, I hope Dr. Rajni, you are able to see different slides for different days.
No, ma'am, you are on first slide only. Slides are not moving actually. Yes, yes, now it is moving. Can you give me host slides? Yeah. Dr. Pooja, continue. It's moving, please. Go ahead. Please go ahead. Thank you. Okay. When we head towards day 4, Dr. Shweta Rani, Assistant Professor, Senior Grade, Department of Geography, Dayal Singh College, University of Delhi, was a resource person for the 4th session of FDP that was held on 30th July. Topic of the session was quality research, innovation, and entrepreneurship. She tried to give a holistic way towards the importance of quality research with reference to NEP 2020. She included many real-life examples to compare the quality of research in India and when we talk about day 3, that is day 5 and session 5. In 5th session that was held on 31st July, Dr. Sanjay Kumar, Secretary General, CTEF Delhi NCR Chapter, Principal Satyavati College, Saraswati College of Professional Studies addressed the session on digital empowerment and online education. In his extremely enriched session, he focused on the concept of digital empowerment, bringing out contemporary concerns such as digital divide, information poverty, the need to transform Indians from digital literacy to digital education. When we talk about day 6, session 6, Professor Dr. R.T. Kaul Kachru, Dean School of Education, Sharda University, Greater Noida, addressed the 6th session of FDP held on 1st August 2022, deliberated on the topic vocationalization in higher education. She explained the status of vocationalization in India through various reports by Government of India. She also discussed provisions for vocational education that are being introduced in NEP. She also come forward to give her suggestions towards NEP 2020. When we talk about day 7, session 7, Dr. Archana Bhattacharya, Vice Chairman of Council for Teacher Education Foundation, CTEF, Assam chapter, addressed the 7th session held today on 2nd August in the morning on the topic revival and promotion of Indian knowledge system. She focused on the existing Indian knowledge system and identified strategies to revive it by promoting. As you can see on the slide, which is there in front of you, after analyzing the feedback data, we feel really very joyful that we have got participants from different professional profiles, and we conclude that most of them belong to the category of assistant professor and followed by associate professors. So if we talk about the participation, we have got participation from almost all the states of India and union territories. Only few states were remaining, and yes, we have got participation from New Delhi and Puducherry. If we talk about union territories of India, so yes. Here is the state-wide distribution of the participants. As you can see that we have got participants from various different states. And not only India, we are not limited to India only. We have got participants from abroad also, Germany, South Africa, Thailand, Bangladesh, Australia, Hong Kong, Philippines, US also. So see, we have reached to that extent. So as you can see in the slide,
the graphical representation of the feedback of the participants on different parameters. The data is quite encouraging and reflects the success of every. So these are the different parameters. This is one question. We are having 4 or 5 such questions that reflects the satisfaction of the participants. Now I hereby invite Professor Dr. Satyendra Gupta, Chairperson, CTEF, Delhi NCR chapter, to give the welcome address. We welcome you, sir. Thank you, ma'am. Namaskar. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Thank you, ma'am. First of all, I would like to congratulate KR Mangalam University, Gurugram, for conducting such a wonderful FDP for the development of the faculty members. And special thanks for connecting with us and conducting this FDP in collaboration with the Council for Teacher Education, CTEF, Delhi NCR chapter. So once again, thank you to KR Mangalam University for initiating and collaboration with us for this FDP. And special thanks to our head, Professor Bhandarkar sir, for coming today for addressing our audience, our participants. So thank you, sir, for taking your time to address the participants. And Madam Thank already you, sir. mentioned all the resource persons, those who contributed in the 7 days FDP program. So again, I would like to thank and extend my thanks to Professor C.V. Sharma, Dr. Amit Ahuja, Dr. Khushvinder Kumar ji, Dr. Preeti Chitkara ji, Dr. Shweta Rani, Dr. Sanjay Kumar, and Professor Aarti Kachru and Dr. Archana Bhattacharya ji for sparing their time to give us the insight about the topic and what is going on and what is new development is coming in light of the NEP 2020. And just we have completed 2 years of the launch of NEP 2020. And during that 2-year duration, you organized that very wonderful FDP. So this is a very right time to discuss and have some opinion of the other experts also. And this will go long because still we are discussing, we are trying to understand what is written in the NEP and how it will change the education system. And already government has taken some initiatives to change the education system, as well as a special chapter is contributed to the teacher education. And because our majority is connected with in this FDP with the teacher education, so soon we will see the changes. And just 2 days ago, I read a news in the newspaper. Now NCT invited the applications for the ITEP, 4-year integrated teacher education program. So now IITs also applied for starting the ITEP program in their campus. So there were some names, Chennai, IIT Chennai, IIT Kharagpur, IIT Guwahati, IIT Mandi. These 4 names especially mentioned in the newspaper news. These are the IITs they initiated and they applied to NCT. So now this is the change which we can see in the light of the NEP 2020. Now the technical institutions, the renowned institutions of the country for imparting the high class engineering education in the country, now they are also stepping in the teacher education. तो भंडारकर सर मैं इसको बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन मान के चल रहा हूं कि आई होप इस इनिशियली दे आर गेटिंग द अप्रूवल और वो दे स्टार्ट द सर आईआईटी खड़गपुर ने तो शुरू भी कर दिया, नोटिफिकेशन निकाल लिया। नहीं सर, अभी तो मैंने देखा है कि वेबसाइट पे तो डिटेल नहीं था, बट पेपर में था कि अप्लाइड
तो यदि एनसीटी दे देता है तो मुझे लगता है कि एक नया चैप्टर, एक नई एज शुरू होगी, थोड़ा सा एक रिकॉग्निशन आएगा इन द टीचर एजुकेशन। जी सर। इज्जत, एक नया क्रेज शायद हम लोगों के बीच में होगा। डेफिनेटली दे विल वर्क एज ए गाइडिंग फोर्स फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे इंजीनियरिंग में एवरी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट दे आर मैपिंग देयर प्रोग्राम विद द आईआईटी प्रोग्राम, तो same way the whole country teacher education institutions, they are running the B.Ed, M.Ed and DLED program, so they will also map their program with the IIT's program। तो भगवान की दया से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और एक नया फेज हमें टीचर एजुकेशन में देखने को मिलेगा। तो एक नया रिफॉर्म है जो कि प्रैक्टिकली हमें देखने को मिल रहा है। तो केवल अभी बात करने का फोरम नहीं रह गया है, अब प्रैक्टिकली हमें ये सारी बातें देखने को मिल रही हैं। तो भंडारकर सर इस पे जरूर बात करेंगे और आगे भी हमें इस तरह के चांसेस मिलेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी 2 दिन से मेरा मन बड़ा खुश है इस मामले में कि कुछ समथिंग पॉजिटिव कमिंग इन द वे ऑफ द टीचिंग, स्पेशली इन टीचर एजुकेशन। इन जनरल एजुकेशन डेफिनेटली वी आर टॉकिंग टू व्हाट चेंज वी कुड ब्रिंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सारे टर्म्स पुराने हैं, नथिंग इज न्यू इन द एनईपी, लेकिन उनको फिर से कैसे प्रैक्टिकली लेकर आए, how we can integrate that concepts in the teacher education, especially in general in all education. Humanities again now gaining some new heights through the NEP, क्योंकि हर जगह बात हो रही है, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल साइंसेज हो, चाहे लॉ हो, कि उन सब में ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज आनी चाहिए। उसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज का टच एक आपके स्टूडेंट्स के अंदर होना चाहिए। If you are making the architect, you are making the doctors, you are making the lawyers, you are making the engineers or any other professional, they should have some human touch. We don't want to make the robots, we want to make the human being, जो कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोच के इन द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन, उसके लिए वो प्रोसेस कर, उसके लिए वो स्कीम्स बनाए। तो डेफिनेटली एनईपी अपने आप में एक बहुत बड़ा गाइडलाइन इसको दे रहा है, रिकमेंडेशंस दे रहा है। और सबसे अच्छी बात अभी तक ये है कि दीज आर द गाइडलाइंस, दीज आर नॉट द फाउंडेशन, कि नहीं आपको केवल यही करना है। आप उस को फोकस करके, उसके लाइट में उसको यूज करके आप किसी भी तरह से उसके रिकमेंडेशंस को अपने सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वेदर यू आर एफिलिएटेड टू or you are the independent university or you are having the autonomous status, whatever your status, you can use the NEP. There is no foundation कि नहीं आप यही कर पाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। So we can think beyond our limitations कि नहीं हम तो affiliated हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी इस बात की परमिशन नहीं दे रही है। Like that value added courses की बात आती है तो anyone can offer or design the value courses in light of the NEP. उसके लिए आपको किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। So I hope जब इस तरह की कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेज हमारे एजुकेशन सिस्टम में आएंगे, only then the stakeholders, especially the students and the parents, then they will recognize yes, now our children, our wards, they are gaining some fruitful information, knowledge in the institutions, and that directly will benefit them, and then they will be able to make a startup or they may start any entrepreneurship, or ultimately they can go for any job. So NEP is recommending job at the last stage. You don't become a job seeker, you become a job offer. So this is the, because 135 करोड़ की जनसंख्या में नेचुरली सभी लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी नौकरी करके जिंदगी आप चला सकते हैं, बट यू विल नॉट गेट द रिकॉग्निशन, एक इज्जत जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती है। तो यदि आप किसी भी तरह से यदि बिजनेस, किसी भी तरह का स्टार्टअप, और अब तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं लाइक द ओवर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उनका मालिक 1 रुपए का एक सामान नहीं बना रहा है, बस दे हैव यूज्ड देयर ब्रेन, और उस ब्रेन को यूज करके विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म now they are earning the crores and crores rupees, and definitely they provided the platform for the various institutions, various organizations, various companies, various production houses. You can sell your concept, you can sell your product through their platform.
तो यही कुछ सोच हमें अपनी शिक्षा से हम लाएंगे, तो then only then I think we can bring back the student in our campus. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज कि स्टूडेंट को वापस कैसे लाएंगे कैंपस के अंदर। तो एनईपी के रिकमेंडेशंस को यदि फॉलो करते तो आई होप विद दीज रिकमेंडेशंस वी कैन bring the students back in the campus. Or those who don't want to continue their education in the offline mode, or they don't want to continue their education in the online face-to-face mode, so now also the government is bringing the digital university. Already there are so many universities, those who are like IGNO, which are offering the programs in the online mode or in the correspondence mode. But now digital university also coming. I think in next academic year it should be launched. तो जिनको नहीं पढ़ना है फेस टू फेस, जिनको रेगुलरली स्कूल में कॉलेज में पढ़ने नहीं आना है, अभी भी NIUS IGNO जैसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और नहीं तो आप फिर डिजिटल यूनिवर्सिटी में आ जाइए, वहां पर उस फैसिलिटी को यूज करिए। So those who are serious, those who want to learn in the face-to-face mode, you come to the institute and universities. तो बहुत अच्छा CV शर्मा सर को सुना है, बाकी और सभी लोगों को सुना है। So thank you ma'am, thank you for inviting me in this session and giving the opportunity to welcome, and thanks to all on behalf of the CTEF Delhi NCR chapter. And once again, thanks to KR Mangalam University, Professor Tania Gupta, and Dr. Meena Bhandari Madam, and definitely the coordinators and moderators of the session, Pooja Verma Ma'am, Deepika Ma'am, and Rajni Gautam Ma'am. And special thanks to Professor Sanjay Kumar, who is doing a lot of work in bringing the education in a new stage and bringing the persons on a platform. He is giving opportunity to all throughout the country. He associated, he connected the persons. You come and think in favor of the education. So thank you, Professor Sanjay Kumar, for arranging such type of FDPs. And I hope with these efforts, CTEF will bring some change in the system of education. And we have the leaders like Kesharao Bhandarkar sir, Nilima ma'am. So under their guidance, their patronage, we will try to reach some new height. So thank you for giving me the time. Thanks a lot. All the best to all. Thank you, sir, for adding value to the session. Thank you for your address. So now I invite Professor Dr. Tania Gupta, Dean SOED KR Mangalam University, to give the welcome address and introduce our honorable chief guests. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Pooja. Good afternoon. A warm welcome to everyone, our esteemed participants, and Dr. Satendra ji, Chairperson, CTEF Delhi NCR chapter. At the outset, I take the privilege and the honor to welcome our chief guest for the valedictory session, Dr. K.M. Bhandarkar ji, who is the National President of CTEF Delhi NCR. He's an educational stalwart, does not require any introduction. I'm too young to actually, do this honor, but nevertheless, I feel this is a very fortunate moment for me that I have the opportunity to introduce sir. And also it is a great day for us that sir is here with us for the closing of the FDP that has been going on since 27th of July. And we are really looking forward, sir, for your valedictory address. For the participants, I would like to take the honor to introduce our CTEF National President and Chief Guest for today's valedictory session. Dr. K.M. Bhandarkar ji, he is presently the National President of the Council for Teacher Education Foundation. He is the reviewer for the Marathi Vishwakosh Encyclopedia, a project of the government of Maharashtra. He is also the Vice President of the Maharashtra chapter of the Indian Association of Life Skills Education. An MSc, MEd, PhD education from NCERT's Regional College, Bhopal,
Sir has served as ex-principal, Punjab Bhai Patel College of Education, Maharashtra, which is a government-aided institution and was upgraded under the Ministry of HRD Government of India. He has been the ex-director at the Nagpur region of Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nasik. He was the ex-dean, Faculty of Education, RTM Nagpur University, Nagpur. He has been the ex-member of Board of Studies, Faculty of Education, Senate, Academic Councils, and Management Council of the RTM Nagpur University, and has worked on various academic and statutory bodies of the several universities of India. To his research, he has successfully supervised more than 200 MEd and MPhil dissertations, and 25 scholars have been awarded PhD under him, and he has been and still is an examiner for PhD with 26 universities across India. Regarding his authorship, his credentials, he's authored 15 books in Marathi, Hindi, and English on vital subjects like population education, environmental education, psychology, and has also developed textbooks, published them with the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education for classes 9 to 12. He has also published several books by the Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nasik, and the National Institute of Open Schooling, better known as NIOS, Noida. Regarding his social contribution, he has been working as the national trainer for value education program of Dharm Bharati Mission, and is working as director of the Tyagacharya Mission, a project for school children. He has been honored with several awards. Among a few of them are Best Author Award of the Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nasik in 2005, Bharat Gaurav Award of India International Friendship Society in 1998, Excellence in Teacher Education Award of the CTE Council for Teacher Education in 2006, National Integration Fellowship of Maharashtra Patrakar Sangh 2007, MB Butch Gratefulness Award of the Maharashtra Teacher Educators Association 2016, and Excellence in Teacher Education Award of the CTEF Kerala Chapter 2019. Sir, we are honored to have you with us today for the session. Welcome once again, sir. On behalf of the IQAC, that is the Internal Quality Assurance Cell of Mangalam University, School of Education, School of Basic and Applied Sciences, CTEF, Delhi NCR, all of us welcome you, sir, for your valedictory address, and we look forward to hear your views on regulatory mechanism and effective governance. Welcome, sir, and over to you. Thank you, madam. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Yashdev Gupta, sir, Honorable Chairman of the KR Mangalam University, Dinesh Singh, sir, Honorable Professor C.S. Dubey, sir, Honorable Vice Chancellor of KRMU, Dr. Satyendra Gupta, sir, Chairperson of the Delhi NCR chapter, Dr. Sanjay Kumar, sir, Secretary of the Delhi NCR chapter of CTEF, Dr. Gupta madam and her team members, Pooja madam, Deepika madam, office bearers of the KR Mangalam University, Dr. Pachori sir, Assistant Secretary General of the CTEF India, Satinder madam, Vice President of North Zone of CTEF, Dr. Nilima Bhagwati, Secretary General of the CTEF, and Dr. Archana Bhattacharya. You are listening to her. Dr. Meena Bhandari madam, esteemed colleagues, friends, and participants. It is my privilege to be here with you people. But let me extend my hearty congratulations to the authorities of the KR Mangalam University and CTEF Delhi NCR chapter as well for organizing this wonderful
FDP for 7 days. I was listening to Professor C.B. Sharma at the inaugural function. Then Dr. Kushwinder sir is my very close friend, and he actually was stressing how we can strengthen teacher education in our country. Then I should congratulate Dr. Sweta Rani madam, Aarti Kaul Kachru madam, Dr. Preeti Chitkara madam, our own Dr. Sanjay Kumar sir, and Dr. Archana Bhattacharya madam for conducting very insightful sessions. Actually, I was attending the session of Sanjay Kumar sir, and as already responded, many participants said that we have heard so many terms for the first time, though they were quite techno-savvy. But that was their response, and that is really encouraging. Under Satyendra Gupta sir's leadership, Delhi NCR chapter is actually playing wonders. Assam chapter is one of the most active chapter of CTEF, then Gujarat chapter, then Kerala chapter, then Karnataka chapter, then Maharashtra chapter, then Uttarakhand chapter. These are some of the very active chapters, and they are organizing programs, and we are now having more than 10,000 plus, I should say, more than 10,000 live members, institutional members, and then individual members. So thanks to the efforts of Professor Nilima Bhagwati and her entire team. Actually, my topic for today is new in the light of NEP. I would like to throw some light on governance and reforms. This is actually very relevant because it is connected with the implementation part of the NEP 2020. As you know, I am basically a teacher educator. And first of all, I would like to bring about what various commissions and committees said about the role of teacher. First of all, Bhandarkar Commission 1948-49. And what the commission said, teacher is a bridge between two generations. He is responsible for transforming knowledge, skills, values, and culture of one generation to another. He is a bridge. Kothari Commission, teacher plays a pivotal role in the teaching learning process. Kothari Commission, the destiny of India is being shaped in her classrooms, not in the assembly, not in the parliament, but in the classroom. That was the observation of Kothari Commission. Then NEP 1986, no people in any country can rise above the level of their teachers. That means teachers should occupy the highest position in the society. And now NEP 2020 says that teacher is a torch bearer. He will lead us on the path of progress. So that is the expectation of NEP 2020 from teachers. Friends, if you go through the forward of this policy written by Honorable K. Kasturi Rangan, it clearly mentions that
there are two bases of policy: sustainable development goals and number two, UNESCO Commission, International Education Commission for Education of 21st Century. The report was submitted in 1996, and I would like to draw your attention towards the 4 pillars which were brought about by this commission. That is, number 1, learning to learn. We say it as Gyan Yoga, and it is related with Gita. Archana Bhattacharya Madam, she was talking about Gita morning session. And learning to learn occupies a special Your screen is not visible and you are not audible also. I think some network issue is there. मैं बात करता हूँ अभी सर से। Is it? Yes, sir. It is displaying, sir. It is displaying. So learning to learn occupies actually a special position because a student attends or university for some years only. But in this changing world, he is supposed to get the new knowledge, new skills. And as Peter Drucker said, only that person will survive in the 21st century who is having skill of acquiring new skills. So this is actually key sentence. Only that person will survive in the 21st century who is having the skill of acquiring new skills. So new skills are to be acquired during the whole life. Learning to do, again Gita, कर्म योग, कोई भी काम हो उसको बहुत अच्छी तरीके से करना, सलीके से करना, व्यवस्थित रूप से करना, मैं समझता हूं लर्निंग बाय डूइंग, ये उसी के आधार पर है. लर्निंग टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट. लर्निंग टू बी, दिस इज एक्चुअली आत्मयोग ऑफ गीता. हु एम आई, मैं कौन हूं, इसको पहचानना. और यदि हमने ये पहचान लिया खुद को, तो मैं समझता हूं बाकी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, सारा ज्ञान अपने आप ही आ जाएगा, सारे स्किल वैसे ही आ जाएंगे. इफ आई नो हु आई एम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लर्निंग टू बी, व्हाट आर माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, व्हाट आर माय अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड, दोज आर टू बी आइडेंटिफाइड. Learning to live together, I call it as Sahan Yoga. Since our country is a secular country, it is our duty to respect all religions. और सभी धर्म है, उनका अंतिम लक्ष्य है मनुष्यत्व की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति. चाहे मोक्ष को आप कुछ भी कह लें, चाहे बहिष्ठ कह लीजिए, चाहे हेवन कह लीजिए, चाहे स्वर्ग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर अंतिम उद्देश्य तो वही है. और सारे धर्मों की बात यदि मैं कहूं केवल आधे मिनट में, तो हिंदू नाम का तो कोई धर्म नहीं है. ये वास्तव में इंडस वैली में, सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस, उसकी वैली में, उसके दर्रे में जो लोग रहते थे, वे आदि सनातन देवी देवता धर्म का पालन करते थे. उनको हिंदू कहा जाता था और उसी का अपभ्रंश होके हिंदू शब्द बना. और उससे भी पहले संस्कृति थी मेहरगढ़,
ये लगभग 7000 पुरानी संस्कृति। मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में है, तो सबसे पुरानी है, हड़प्पा बाद में आई। और देखिए, मुस्लिम की बात कहूं, मुस्लिम है जिसका ईमान, वही मुसलमान है। जिसका ईमान कभी डोलता नहीं, वह सही मायनों में मुसलमान है। क्रिश्चियन, a person who is a critical thinker is a Christian, and that is why Plato was a Christian who was born 400 years before Jesus Christ. जैन, जिसने षट रिपुओं को जीत लिया, जिन कहेंगे, उसी से शब्द बना जैन। सिख, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले। सिख का मतलब ही शिष्य है, गुरु के आदेश का, उनके प्रिंसिपल्स का पालन करना, यही शिष्यों का धर्म है सिख। कोई भी धर्म आप लीजिए, उसका उद्देश्य केवल मानवता को प्राप्त करना और जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, यही उसका उद्देश्य है। पर लर्निंग टू लिव टुगेदर, छोटी छोटी चीजों के लिए जो झगड़े हैं उसको भूल जाना चाहिए। और निश्चित रूप से हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि कोऑपरेशन एंड लिविंग टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी मैं विजन की बात करूं, फिर मैं अपने विषय पे आऊंगा। देखिए, मैं साफ साफ लिखा है, द करिकुलम एंड पेडागोजी मस्ट बी डेवलप्ड द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये सारी बातें जो है प्रिंसिपल्स में आई है और विजन में आई है। जैसे सीबी शर्मा सर भी बात कर रहे थे कि हमारी हम जिम्मेदारी है उसको समझे, और ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनका हम सम्मान करें। और देखिए, इंडियननेस की बात भट्टाचार्य जी मैडम भी कह रही थी, हर चीज हर व्यक्ति करता है टू इंस्टिल अ डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन, not only in thoughts but also in spirit, intellect and deeds. बहुत अच्छी बात विजन ने कही। To develop knowledge, skills and values, responsibility and commitment towards human rights and global well-being, to become or to develop a truly global citizen. आज इस 3A सोसाइटी में, 3A सोसाइटी क्यों? वी कैन कनेक्ट एनी पर्सन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क में कोई बैठा है, मैं उससे बात करना चाहता हूं, अभी कुछ सेकंड में फोन लग जाएगा। दिस इज 3A वर्ल्ड, 3A सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग। वी कैन कॉन्टैक्ट, वी कैन कनेक्ट एनी पर्सन in any corner of the world and at any point of time. So this is in fact a 3A world. इस स्थिति में हमको ग्लोबल सिटीजन डेवलप करना ही है। और सारी चीजों का अंतिम उद्देश्य क्या है? टू अचीव क्वालिटी इन एजुकेशन। एंड व्हाट टू से अबाउट क्वालिटी? क्वालिटी इज डिसाइडेड बाय द स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर है वो डिसाइड करेंगे क्वालिटी, हम नहीं करेंगे। जैसे मैं कोई कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, मैं कोई कॉलेज चलाता हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी की या मेरे इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी क्या है ये स्टेक होल्डर डिसाइड करते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं तो कहूंगा कि मैं अच्छा हूँ, मेरा विश्वविद्यालय अच्छा है, मेरा इंस्टीट्यूशन अच्छा है, मेरा कॉलेज अच्छा है, ये लोगों ने कहना चाहिए। So quality is decided by the stakeholders, and the ultimate goal of NEP 2020 is to achieve quality, to maintain quality in higher education. And what to say about quality? It is rightly said that if you wish to destroy any country, you don't need atom bombs, you don't need long range or short range missiles also. Let the students
cheat in the examination. And what will be the product of such education? Buildings and bridges will collapse at the hands of such engineers and architects. Money will be lost at the hands of such CAs and accountants. Patients will die at the hands of such doctors. Justice will be denied at the hands of such judges. And future generations will get spoiled at the hands of such teachers. So that is how quality is important. Now, let me switch over to my actual topic. That is, first part is governance. How the institutions, which includes universities also, is to be governed. And what is the etymology of this word? Etymology of the word, that is from Greek word kubernan, means to steer or to rule. And from this Greek word, Latin word is derived, and it is gouverner, gouverner. And then French word governance, which means government rule or administration. दो शब्दों में वैसा थोड़ा फर्क है. एक शासन होता है, दूसरा प्रशासन होता है. एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रशासन. शब्द देखिए किस प्रकार से बना है. प्रशासन एक्चुअल शासन नहीं है. इट इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ शासन. सो इट इज प्रशासन. जैसे यूनिवर्सिटी में कुलगुरु भी होते हैं और प्रकुलगुरु भी होते हैं. कुलपति होते हैं, प्रकुलपति भी होते हैं. एंड द प्रकुलपति वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ कुलपति, चांसलर. In Hindi region, they say Kulpati. In our region, we say Kulguru, Vice Chancellor. So, to govern means to control or regulate the course of events. To govern means to conduct or to execute the policy, actions, and affairs of a state or an organization. So this is actually the meaning of govern. Then what is governance? Governance is the process of interactions through law and norms and powers of an organized society over a social system. देखिए शब्द बड़े तौल के उपयोग में लाए हैं. सोशल सिस्टम, organized society. Organized society may be an organization, may be an institution, may be a government, may be a university also. And how, what they are giving to society, how they are working in social system. Governance ensures everyone, an organization follows appropriate and transparent decision-making process and protect the interest of all the stakeholders. एक प्रकार की गारंटी देता है गवर्नेंस कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसका हर मेंबर, जो गवर्नमेंट है उसका हर सदस्य नियम के अनुसार चलेगा, कानून के अनुसार चलेगा, और स्टेक होल्डर्स जो है उनके इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा. Then what are the principles of effective governance? These are some of the principles. Competence. This is again a very big term. And you know, NCTE has identified 10 competency areas for teachers, especially. Sound policy making. Policy making is again a big affair. You have to plan, then you have to acquire responses,
then you have to implement, and then you have to get feedback, and lastly you have to evaluate that policy. So sound policy making, collaboration is again very important in democratic society. Accountability, we are all aware of the meanings of this term. Integrity, honesty, inclusiveness, nobody should be left behind. दो शब्द है देखिए, सर्वोदय और अंत्योदय। सर्वोदय तो सभी का विकास बहुत जरूरी, इंक्लूसिवनेस दिखाता है, पर उससे भी महत्वपूर्ण बात है अंत्योदय, जो हमारी सोसाइटी में तरक्की के सबसे आखिरी पायदान पर, सबसे आखिरी सोपान पर खड़ा है, उसके लिए ये पॉलिसी क्या कर रही है, that is to be taken into account. So that is inclusiveness. And हमने देखा है इस पॉलिसी की प्रोविजन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से लेकर सभी तबकों का बड़ा अच्छा तरीके से विचार इस पॉलिसी में किया गया है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल। आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, most of the cases are based on the article 14, that is discrimination, because the petitioner says I am suffering from discrimination, so I should get justice from this court. So that is at the base. Unequal justice to equals, that cannot be done. Participation, everybody's participation is extremely essential if we wish to get succeed. Then intergenerational equity, बड़ा सुंदर शब्द है, intergenerational equity. There is a lot of difference between इक्विटी एंड इक्वेलिटी। मेरे पास 20 रोटियां है, 10 बच्चों को देना है, उसमें 1 साल का भी बच्चा है, उसमें 12 साल का भी बच्चा है। इक्वेलिटी कहेंगी सबको 2-2 दे दो, इक्विटी कहेंगी जो छोटा बच्चा है उसको कम दो, जो बड़ा बच्चा है उसकी जरूरत ज्यादा बड़ी है उसको ज्यादा दो, दैट इज इक्विटी। एंड देखिए फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, वो इंटरजनरेशनल की बात मैं कर रहा था। इंटरजनरेशनल में जिस जनरेशन की जो आवश्यकता है उसके अनुसार प्रोविजंस किए जाए, ये उसका उद्देश्य था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी बिल्कुल होना चाहिए, कंसेंसस, कोई भी डिसीजन हो यूनानिमस होना चाहिए, सबकी सम्मति से होना चाहिए, सबका विचार जो है ध्यान में रखकर होना चाहिए। इसीलिए लगभग 1.5-2 साल तक अलग अलग फोरम पे इस पॉलिसी पे विचार किया गया, लाखों की संख्या में सजेशंस आए, उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई। देन ओरिएंटेड, यस, ये विकासोन्मुखी होना चाहिए, इट शुड बी डेवलपमेंट ओरिएंटेड। कोई भी इफेक्टिव गवर्नेंस का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इट शुड बी डेवलपमेंट ओरिएंटेड, विकासोन्मुखी का होना चाहिए, अकाउंटेबल जरूर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बहुत ज्यादा आवश्यक, रिस्पॉन्सिव, कोई किसी की तो उसको सुनना चाहिए, उसका समाधान भी निकालना चाहिए। इक्विटेबल, अगेन वही बात आई इक्विटी की, इंक्लूसिव,
बड़ा सुंदर शब्द है पर बड़ा व्यापक है। क्या इथिकल है, क्या नॉन इथिकल है, किसी के लिए क्या इथिकल है, समझना बहुत मुश्किल है। पर इन जनरल जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वो समाज जिन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, जो उस समाज के लिए उपयोगी है, उन्हीं चीजों को इथिकल मानेंगे, उन्हीं चीजों में हम नैतिकता है इसको मानेंगे। इनोवेटिव, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं। फिर हम इतना ही कहेंगे कि जितने भी नवाचार है ये सारे शिक्षा में आने चाहिए। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशन शुड फ्लेक्सिबल, इसमें तो एग्जिट पॉइंट का ख्याल रखा गया है। क्या कोई दूसरा सब्जेक्ट ऑफर कर सकते हैं या बीच में एक कोई पढ़ाई रोक के फिर दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हैं। पर आप देखिए, मैं बाबा साहेब आम्बेडकर का उदाहरण दूंगा। कितने साल पहले, 80-85 साल पहले जब वो शिक्षा ले रहे होंगे, उससे भी ज्यादा 90 साल तो निश्चित रूप से होंगे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसी समय वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भी शिक्षा ले रहे थे। बीच में छोड़ के आगे सर्विस की, पैसे जमा हो गए तो फिर वापिस गए, अपनी पढ़ाई शुरू की। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दैट वाज ऑलरेडी देयर some 90 years before in European or say Western universities, and we are now thinking about the flexibility in mode of transaction, in mode of forming curriculum. If we wish to form curriculum in system, I am saying about traditional universities, and due to my tenure of 30 years in the university, affiliated colleges and university bodies, if we were willing to change our curriculum, then it now takes at least years to change the curriculum, because the study will appoint the committee for curriculum development that will go to faculty of education, and then it will go to academic council, then it will go to management council or say executive council. We are having University Act in Maharashtra. Previously it was University Act 1974, then Maharashtra Universities Act 1994, and now it is Public Universities Act 2016. So it takes at least 3 years to change the curriculum. I am speaking about state universities and especially in Maharashtra. Lastly, the curriculum framework is to be submitted to Chancellor's office, head of the universities, and then he or she will approve that, and then it will come to those bodies again, and then it will be implemented. It takes at least 3 years. And by that time, that so-called new curriculum becomes outdated. So that is the position. So flexibility should be there, and autonomy should be definitely there. Sustainable. Yes. Governance should be sustainable also. And above all, it should be democratic in nature. In 19.1 of the NEP 2020, it is clearly mentioned that effective governance and leadership enables the creation of culture and excellence, culture of excellence and innovation in higher education institutions. Here I should make it clear that institution means all institutions, IITs, NITs, medical colleges, then academic colleges, then universities, autonomous universities, deemed to be universities, and whatever. All universities. The common feature of all world-class institutions
has been the existence of self-governance and outstanding merit-based appointments of the institutional leaders. अब यहाँ भी मैं एक बात निश्चित रूप से आपको कह दूं, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, हमारे यहाँ हमारे स्टेट में विशेषकर जो स्कूल में हेडमास्टर बनाए जाते हैं, those are promoted. There is no direct selection. So that is the tragedy. प्रमोट कौन होता है? जो सीनियर मोस्ट है. मैं सीनियर मोस्ट हूं किसी स्कूल में, मुझे एज ए हेडमास्टर प्रमोट कर दिया. अब मेरा समय कितना बचा है? 10 महीने, 12 महीने या मुश्किल से 1 साल, 1.5 साल. अब मेरी मानसिकता ये हो जाती है, बर्नआउट का कंसेप्ट सबको मालूम है. मेरी मानसिकता ये हो जाती है कि ये इतने छोटे समय में अब मुझे क्या करना है? जो चल रहा है वो चलने दो, और किसी को भी मुझे कोई शोकाज नोटिस नहीं देना है, किसी को भी कुछ भी करना नहीं है. मैं जैसा चलता है वैसे चलने देता हूं. दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी. सो एक्चुअली देयर शुड बी direct selection, direct recruitment of leaders at least. That is very important, because it is again said, as is the headmaster, so is the school, and that is applicable to higher education institutions also. So appointments of leaders and staff members, that is a very, very big issue. Through a suitable system of graded accreditation and graded autonomy, and in a phased manner over a period of 15 years, HEIs in India will aim to become independent, self-governing institutions pursuing excellence and innovation. बहुत सुंदर प्रोविजन यहाँ की गई है कि ये समझ में आ गया हम लोगों के कि उस इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से ऑटोनॉमी देनी चाहिए. बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके वो कोई भी उपक्रम ठीक से लागू नहीं कर सकते, और कोई भी इनोवेशन है उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते. ये बिल्कुल सही बात है. नए जो इनोवेशंस आए, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, इसको यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लाने के लिए हम लोगों को कई साल संघर्ष करना पड़ा. क्यों? We are supposed to follow the University Act. We are supposed to follow the statutes. We are supposed to follow the ordinances of the university, and we have to work in that framework only. So autonomy is very important. And as far as my observation is concerned, I have seen so many autonomous colleges in Karnataka, especially, and in Maharashtra also, many colleges are trying to get autonomy. And what is the provision for governing the institution, for governing the university? You can say Board of Governors, BOG, shall be established, consisting of highly qualified and dedicated individuals having strong sense of commitment to the institutions. The BOG of the institution will be empowered to govern the institution free from any interference, any external interference. That is, I think, the gist of BOG, formation of BOG. Expectation is that BOG should work without entertaining any external interference, and that is too much in our country. This is our observation. So many types of interferences are there, right from local government, state government, state administration, and so many authorities and so many bodies. But here it is expected that BOG should work without entertaining any external interference
and that is I think the most important provision. It will be free to make all appointments, again a matter of, including that head of the institution, and take all decisions regarding governance of the institution. बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी अपेक्षा कर दी, पर अब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, जिनकी संस्थाएं हैं अपने लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं, और किस प्रकार से इसको प्रैक्टिस में लाया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के कॉलेजेस, जिस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस, जिस प्रकार के स्कूल्स फिलहाल हमारे देश में, हमारे स्टेट में स्पेशली चल रहे हैं, वहां इसको लागू करना मैं समझता हूँ एक हरक्यूलियन टास्क है। ये बिल्कुल आसान नहीं है। ये किस प्रकार से लागू होगा, मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूं। The BOG shall be responsible and accountable to the stakeholders. बड़ी अच्छी बात कही, हमेशा स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा है पॉलिसी में, बिल्कुल इसको नोट किया जाए। Accountable to the stakeholders through transparent self-disclosures of the relevant records. If we are working in a college or institution which is governed by the apex bodies like NCTE, like AICTE, like Medical Council of India, like Pharmacy Council of India, they know that we have to display actual records on our websites. It will be responsible for meeting regulatory guidelines mandated by HECI, that is Higher Education Commission of India, highest body for higher education, through the National Higher Education Regulatory Council, NHERC. Then let us switch over to regulatory system of higher education. Higher Education Commission of India will be established as an umbrella institution. It will be having 4 verticals. And as Professor C.B. Sharma rightly mentioned, the policy has been implemented already, at least up to 40% extent. Yes. And he also mentioned this word, I was listening carefully. National Higher Education Regulatory Council, NHERC, will be set up to regulate in a light and tight and facilitative manner. Regulations तो अच्छे होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, पर वो इंस्टीट्यूशन फ्रेंडली भी होंगी। वो इंस्टीट्यूशन इसको बंद करो, उसको बंद करो नहीं, इसको सुधारो, इसको इस प्रकार से करो, इसको उस प्रकार से करो, ये उसका उद्देश्य है। इसलिए शब्द है इट विल एक्ट इन ए फैसिलिटेटिव मैनर। फैसिलिटेटिव मैनर बड़ा अच्छा शब्द उपयोग मिला है। इट विल लुक इनटू द फाइनेंशियल मैटर्स, ऑडिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फैकल्टी, कोर्सेस एंड एजुकेशनल आउटकम्स। ये सारी बातें हम जानते हैं। एजुकेशनल आउटकम्स अच्छी भाषा में हम इसको अभी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। Those objectives which are actually achievable. To inculcate scientific attitude among students is actually general objective. It is abstract in nature. We may or may not achieve it. अब मैंने MSc किया, फिर भी मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मुझ में साइंटिफिक एटीट्यूड है। No, nobody can take guarantee. So that is the problem, because the objective is abstract. It cannot be measured. पर यहाँ वो बात नहीं है।
यहाँ एजुकेशनल आउटकम से मतलब है these are actually smart objectives. This should be achievable. This can be tested also. For example, जैसे मैंने कह दिया मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, how to prepare hydrogen in laboratory and how to prepare oxygen in laboratory. और मैंने कुछ केमिकल्स ले लिए, Zn ले लिया प्लस H2SO4 ले लिया, रिएक्शन हुआ, कैटालिस्ट डाला और बाद में मैंने टेस्ट किया, वास्तव में ZnSO4 प्लस H2 दैट इज हाइड्रोजन ये तैयार हुआ या नहीं, हो जाता है तो मैं ये समझूंगा कि मेरा स्टूडेंट जानता है कि हाइड्रोजन किस प्रकार से लैब में तैयार किया जा सकता है. सो दैट कैन बी टेस्टेड. So these objectives actually, these are smart objectives which are achievable in a specific time period. It will maintain its own website disclosing all information regarding institutions. अब वो institutions को तो अपने वेबसाइट में देना ही है सब, पर ये जो रेगुलेटरी बॉडी है NHERC, इसके वेबसाइट पे भी उस इंस्टीट्यूशन की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. ये बहुत सुंदर बात कही है यहाँ. दिस काउंसिल विल बी हैविंग एडजुडिकेटरी पावर्स. किसके साथ कुछ अन्याय हुआ, किसका कुछ ग्रीवेंस है, तो लीगल पावर भी इसके साथ है. डिसीजन इसका भले ही बाद में चैलेंज हो, पर लीगल पावर तो है. It will be having adjudicatory powers also. Students in will be solicited online. मैं समझता हूँ ये सुंदर प्रोविजन है. क्वालिटी एश्योरेंस की बात हम करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने यूनिवर्सिटी से. तो यहाँ जो स्टेक होल्डर है, they will select randomly the stakeholder, the students, and they will solicit online feedback from them. मुझे बिल्कुल याद है मेरे इंस्टीट्यूशन में जब तो उन्होंने हम सबको बाहर, सबसे पहले क्लासरूम में प्रवेश किया, सबको बाहर कर दिया. केवल नैक मेंबर्स वहां थे. बच्चों को उन्होंने अपनी ओर से ही कागज दिए, बैंक पेपर्स, और उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय के बारे में, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की डिसिप्लिन, जो भी आपका है, इसके बारे में या आपके ग्रीवेंसेस आप इस कागज पे लिखिए और किसकी चिंता मत करिए. ये केवल हम पढ़ेंगे और आपके सामने इस पूरी कागज नहीं होगा कि वो कॉलेज बदला, आपने हमारे कॉलेज के बारे में लिखा. यहाँ तो बात है कि ऑनलाइन ही हम मंगाएंगे, कि हमारा कॉलेज, हमारा महाविद्यालय किस प्रकार से कार्य कर रहा है, इसका फीडबैक लेंगे. तो ये बड़ी अच्छी बात यहाँ इन्हें कही. ऐसा नहीं कि मेरे अपने हैं उनको मैं भेज दूंगा और कहूंगा कि आप दे दो अपने कमेंट्स और कह दो कि मेरा महाविद्यालय. Yes, sir. It is being shared. Thank you. I hope I am audible. Sir. Yes, sir. Yes, madam. Actually, this is actually very good provision.
and they will actually assign the role of supervisory body to NAC. One is now National Assessment and Accreditation Council. Now its new nomenclature will be NAC, NAC, National Accreditation Council. It will be mode of accreditation also. Previously, they were appointing their own committees directly and sending them to the institutions or universities, whatever. But now they will assign this duty, this task to some. I think some network issue is there from sir side. So They will assign this task. Yes, I hope our screen is now visible. Yes. yes, sir. It's visible now. Quality, self-governance and autonomy will be taken special care of. It is mentioned that robust system of graded accreditation shall be evolved. Yes, is understood. Then quality, self-governance and autonomy will be taken special care of all HEIs, that is higher education institutions, through their institutional development plans. This is again IDP, institutional development plan, has to be submitted to the concerned bodies by the institution. Here we have to submit it to the NAC also. And there is college development committee, in each and every college, there is college development committee. And that committee prepares institutional development plan for each and every academic year. All HEIs through their institutional development plans will aim to attain highest level of accreditation over the next 15 years and head towards becoming self-governing degree granting institutions. So this is actually height of autonomy. विदेश में कई संस्थान ऐसे हैं कि उनके नाम पर ही इवन स्कूल भी, वो स्कूल अपना ही सर्टिफिकेट देता है, and that is actually equally honored with the so-called bodies, degree giving bodies. तो अभी तो देखिए यूनिवर्सिटीज के जो हाल है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, यूनिवर्सिटीज क्या करती है, यूनिवर्सिटी हमारी जो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज, these universities are simply examining bodies. Their examination workload is just so high, nothing can be thought of regarding development of curriculum, then new procedures, then transaction methods and all that. All university staff is engaged in conducting examinations, in planning examination, conducting examination, then evaluating the papers and declaring the results. More than 90% of the total workload is assigned to examination only because our education system is examination oriented. That is why universities are helpless. I have frequently mentioned that there should be at least one state board for conducting university examinations, and it will look after the examinations of the all universities at that particular state. So the working of universities are hampered on account of the
conducting of examinations, and now it is semester system. So the workload of examination has just doubled. So you can imagine the state of additional universities. And here the actual aim is to convert the HEIs in self-governing degree granting institutions. मुझे लगता है कि वो इंस्टीट्यूशन के नाम से ही डिग्री दी जाए आगे पीछे, तो उसको कुछ हमको मान लेना चाहिए। वो सबसे बड़ी बाइंडिंग होगी उस इंस्टीट्यूशन पर कि उसकी डिग्री की समाज में, जॉब मार्केट में क्या वैल्यू है, हाउ मेनी पीपल ऑनर द डिग्री और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा गिवन बाय दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। और इससे फायदा ये होगा कि वो इंस्टीट्यूशन अपने आप को सुधारने का भरसक प्रयास करेगा कि भाई अभी तो ऐसा है कि मेरे सर्वाइवल का प्रश्न है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट वाज द प्रिंसिपल of theory of evolution, and now actually it should be survival of the most acclimatized. Acclimatization is a better term than survival of the fittest. It should be survival of the most acclimatized. Acclimatization is a process of modifying oneself according to the needs of the environment. So that is very important. Each institution should become the degree granting institution, totally autonomous institution. The third vertical of HECI will be higher education grants council, which will look after financing and funding of the institution on the basis of IDPs, that is institutional development, and the institution. HEGC will also be interested with disbursement of scholarships and development funds. अभी तो फिलहाल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है और यहाँ प्रोविजन है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, और अपेक्षा है कि इंस्टीट्यूशनल प्लान्स जो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के आधार पर HEGC सारे फंड्स का डिस्बर्समेंट करेंगी। और यही नहीं, स्कॉलरशिप, ये भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है हमारे देश में। द फोर्थ वर्टिकल ऑफ HECI will be General Education Council, GEC, which will be framed the expected learning outcomes, that is SMART objectives, and they have used the term graduate attributes. That means the special competencies and skills and level of knowledge a graduate is expected to possess after completing his or her graduation. So that is graduate attributes, कि इतनी बातें तो भाई कम से कम आपको आनी ही चाहिए। It will formulate national higher education qualification framework, NHEQF, in synchronization with National Skills Qualifications Framework, NSQF. So these are all national bodies which are in the process of forming. Actually, these bodies will be constituted in near future and they will start their working. But the provisions are very good. The GEC will identify skills that a graduate must acquire during his or her graduation program. Professional councils such as Indian Council of Agriculture Research, ICAR,
Veterinary Council of India issued VETE, VCI, National Council for Teacher Education, NCTE, Council of Architecture, COA, National Council for Vocational Education and Training, NCVET, will act as professional standard setting bodies, PSSBs. All these institutions are already there, these bodies are already there, and these councils will act as professional standard setting bodies. So this is again a very good provision. क्यों ऐसा किया होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही काउंसिल को सारे काम दे दिए तो बड़ा एक कंफ्यूजन हो जाता है, परमिशन भी वही होंगे, एग्रीडिटेशन भी वही करेंगे, सब एक जगह, that create a lot of problems. So this vertical separation is there, opportunities. In the light of this governance policy and regulatory bodies, what are opportunities and why these opportunities are specially available for Indians? India is a country of young people. India can become manpower hub of the world. Everybody will agree with this. But only if, I repeat, but only if our young population is well equipped with skills of the 21st century. By virtue of its traditional knowledge, tacit knowledge is also there, though it is not recorded, but it still exists. Tacit knowledge. By virtue of its traditional knowledge, India can become world leader and Vishwa Guru. Let us have a look at the average age of the leading countries of the world. How average age is calculated? Actually, it is computed by adding the age of total people in the country. For example, population of India at present is 140 crores. Right from the child of 1 day, including that a person who is actually 90 years old, we will add the age of all these 140 crore people, and then we will divide it by 140. And then we will get average age of the country. So this is how it is calculated. Average age of Japan is alarming, 48.6 years. 48.6 years. Germany, 47.8 years. Italy, 46.5 years. France, 42.3 years. Canada, 41.8 years. USA, 38.5 years. China, 38.4 years. And India, 28.7 years. That is why India is called a country of young people. And so many opportunities are there. But at the same time, challenges are also there. Maintaining quality, biggest challenge. In the previous years, there is mushrooming growth of the institutions and universities and so many other bodies which are catering for the examiners, for the stakeholders, for the students. But we were not able to maintain the quality. Quality is very important. So maintaining quality is the biggest challenge. Lack of competency at every level. Commercialization of education, that factor is also there.
corruption. What to say about it? Lack of dedication. Again, NCT has identified 5 areas of dedication for a teacher. I am talking about teacher. Dedication towards students, dedication towards institution or say university, dedication towards society. 5 areas they have identified. Superstitions. Why I have taken this point here? So many superstitions are still existing in this country. In spite of scientific progress, technological advancement, we could not overcome this problem. So many types of superstitions. Population education or explosion, sorry. Again, a very big problem. आप 10 करोड़ लोगों के लिए कोई व्यवस्था बनाइए, मांगने वाले 20 करोड़ हो जाते तैयार. जब तक आप 20 करोड़ की व्यवस्था करें, मांगने वालों की संख्या 30 करोड़ हो जाती है. जब तक आप 30 करोड़ की सुविधाएं जुटाए, मांगने वाले की संख्या 50 करोड़ हो जाती है. So that is actually a big gap between development and need of the people. Population explosion, the biggest challenge which our country is facing. Lack of funds. Everywhere we need money to have good infrastructure, to have good faculty and all that. But lack of funds is there. और मैं यहाँ एक सजेशन बाद में दे रहा हूँ. Social differences, again, social differences due to caste, religion, economic status, lifestyles, ideological poverty is also there. Mindsets, we have to change our mindsets. Then lack of common sense is also there. We experience it everywhere. And I have suggested in some universities, especially in private universities, that there should be a paper of common sense education. We know 5 senses. We know 5 senses which are related to our sense organs, 5 sense organs. 6th sense is common sense, which is not so common. And 7th sense is nonsense, which is very common. So common sense education should also be there. And again, life skills. मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे पास वो तरीका ही नहीं कि कैसे जिया जाए. जैसे जीवन की कला मेरे पास नहीं है, जीवन का कौशल मेरे पास नहीं है, तो मैं समझता हूँ मेरी सारी चीजें बेकार है, किसी उपयोग की नहीं. कोई भी हार्ड स्किल हो, सॉफ्ट स्किल्स हो, उससे भी इंपॉर्टेंट है लाइफ स्किल्स. And WHO has identified 10 life skills, but there are hundreds and hundreds of life skills. For example, they have left away patience. क्यों नहीं होना चाहिए भाई? पेशेंस तो होना ही चाहिए. पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्कुल होना चाहिए. यदि ऑप्टिमिज्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है. ऐसी कई बातें, सैकड़ों चीजें हैं लाइफ स्किल्स में जिनको हमने अभी अपनी करिकुलम में, अपने पाठ्यक्रम में लाया ही नहीं है. एंड दिस इज एक्चुअली अ नीड ऑफ द आवर टू इंक्लूड ऑल in our school curriculum and in higher education. And lastly, I would like to go a very good suggestion. I would like to suggest establishment of National Fund for Education, that is NFE. जिसके पास जितना भी ज्यादा पैसा है, भाई साहब या बहन जी, किसी मंदिर को मत दो. नेशनल फंड है, उसमें हम टीचर का वेलफेयर देखेंगे, शिक्षा का वेलफेयर देखेंगे, स्टूडेंट का वेलफेयर देखेंगे. जो भी जरूरतमंद है उसकी हम उससे सहायता करेंगे. शिक्षा बनाए रखने के लिए उसका पूरी तरह से उपयोग करेंगे. उसको कहा जाए नेशनल फंड फॉर एजुकेशन.
कोई सहायता विदेश से आती है, कोई हमारा विदेशी भाई बहन है वो देना चाहता है, वो कहीं मत दे, केवल नेशनल फंड फॉर एजुकेशन में अपनी राशि जमा करे। और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का फंड, राष्ट्रीय स्तर का मैं समझता हूँ निधि जमा हो, और उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत सारी अच्छी बातें निकल जाएगी। क्योंकि अच्छी चीजें हायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, ये हमको मान्य करना पड़ेगा। चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स लाए तो उसके लिए भी हमको पैसे देने होंगे। बाहर के देश से भी एक्सपर्ट लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको काफी खर्च करना होगा। तो नेशनल फंड फॉर एजुकेशन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जरूरत है इस समय की, और इसको विकसित किया जाए। जिसके पास जितना भी ज्यादा पैसा है, जो दे सकता है, बिल्कुल उसमें देंगे। तो ये मेरा सजेशन मैं समझता हूँ रहेगा। ये देखिए बहुत अच्छा स्लाइड मैं हर प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। सारी जो बातें हैं, टीचर के बिना कोई भी शिक्षा प्रणाली में कुछ भी नहीं। टीचर के सिवा आप कुछ भी नहीं कर सकते। टीचर के सिवा कोई भी शिक्षा प्रणाली कभी भी सफल नहीं हो सकती। ये 100 बार कहा गया, 1000 बार कहा गया, लाख बार कहे तो ये सत्य है। ये बात शाश्वत है कि बिना अच्छे टीचर के कुछ भी नहीं हो सकता। मैं एक किताब पढ़ रहा था, महाभारत कालीन शिक्षक, उसमें ऋषि का उल्लेख था जो ज्ञान प्राप्त करते थे पर वो अपने तक ही सीमित रखते थे, वो कोई ज्यादा इधर उधर उसको नहीं करते थे। उसमें आचार्य का उल्लेख है जो अपने आचरण के माध्यम से लोगों को सिखाते थे बहुत सारी बातें, व्यवहार की, ज्ञान की, कौशल की, सारी बातें। उसमें मुनि करके भी एक उल्लेख है, ऋषि, मुनि और आचार्य। मुनि वह व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त करता है और उसको डिस्बर्स करता है। तो हम देखेंगे जैन मुनि है जो विद्यासागर जी है, कोई भी जैन मुनि आप लीजिए, वो प्रवचन देते हैं तो अपने पास जो ज्ञान है उसको प्रचार और प्रसार उसका करते हैं। ऋषि, मुनि, आचार्य और अध्यापक, यह शब्द उस समय भी था, बिल्कुल ध्यान में रखिए। और 6ठी शताब्दी में कालिदास ने यहाँ तक कह दिया कि जिसके पास संप्रेषण कौशल नहीं, a person who is not having communication skill should not become a teacher। कितनी बड़ी बात ये 6ठी शताब्दी में कालिदास ने कह दी थी। तो देखिए कैटेगरी 1 कॉम्पिटेंसी अब्सेंट, कमिटमेंट अब्सेंट, रेड सिग्नल है भाई। इस प्रकार का टीचर न इंस्टीट्यूशन के लिए, न यूनिवर्सिटी के लिए, न समाज के लिए, न छात्र के लिए, किसी के लिए कोई खास उपयोगी नहीं होगा। नंबर 2 कॉम्पिटेंसी प्रेजेंट, कमिटमेंट अब्सेंट। कॉम्पिटेंसी तो है, अभी क्षमताएं बहुत सारी है, नॉलेज है, पढ़ाने का तरीका है, न्यू पेडागोजीज, the teacher is aware of all those pedagogies including project based learning, the most practiced pedagogy in modern times। पर कमिटमेंट ही नहीं है तो आप क्या करोगे? कमिटमेंट तो बहुत जरूरी। competencies can be acquired in due course of time, but what about commitment? So this type of teacher will be of little use. He or she will be useful up to some extent only. Number 3, competency absent, commitment present. This type of teacher will be useful up to a great extent because commitment is present. The teacher will acquire competencies in due course, but this type of teacher will be definitely helpful. But we in fact need teachers of 4th category, competency present and commitment present. If both these are present, then there is no need to say anything. This type of teacher will
definitely create a student who will create history in his or her life. He or she will definitely become a global citizen. And the most terrible slide of all audience is thank you. I wish to express my gratitude towards the authorities of the KR Mangalam University, a very prestigious university. I am grateful for organizing this FDP in collaboration with our very, I say, lovable, big organization, that is Council for Teacher Education Foundation, which is having 23 state and union territory chapters in India and a chapter in Nepal, in Bangladesh, in UK, in USA, and Singapore chapter is likely to be opened in October or November. So I express my gratitude towards Delhi NCR chapter for organizing this wonderful FDP. And my colleagues, friends, professors, and all others. Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. Namaste. Thank you, sir, for your appreciation. But before going ahead, can we take one or two questions that are there in Q&A section? Yes, madam. Yes, please. G, one question is there from the side of Pallavi Rao Kandi. She writes that, good afternoon all, with due respect, we do have good government, have failed to promote good governance. How can we resolve this? Good government. Madam, please repeat the question. Sir, it is written, आप भी देख सकते हैं Yeah. question and answer section में नीचे. Yeah. We do have good government, but it Yes. failed to promote good governance. How can we resolve this problem? Yes, madam. Actually, government willingness should be definitely there. And as asked in the question, government is good. Government is trying to implement the policy. But what will happen if the policy fails? Then I think this responsibility is definitely goes to by people. It is our responsibility to implement this policy in its letters and spirit. It is our responsibility of each and every person. He or she may be a teacher or may not be a teacher. But somehow he or she should support this policy. Then and then only it can succeed. Otherwise, so many policies we have implemented and you know the outcome. I should not say anything. So this should not happen to this policy also. So it is our responsibility. It is responsibility of yourself and myself as an individual, as an Indian, to help to see how this policy becomes successful, how the stakeholders are at advantage due to this policy. Provisions are there, but unless and until these are implemented properly at the ground level, the stakeholder will agree nothing. But you were asking about the solution. So only solution is to work for that policy. That is the solution. To help to implement this policy.
Thank you, sir. That was quite clear. Thank you, sir, for the enriching session on effective governance and regulatory reforms. So, thank you, sir. So now we will head towards the feedback session, and we will be taking some participants, and they can give their feedback, but that feedback should be brief enough because we are lagging behind of schedule. So yes. So it's time to hear from our participants. I would like to invite Mr. Shubhadeep Sarkar, Assistant Professor, CCOM Skills University, West Bengal. Sir, please. Sir, can you please raise your hand so that we can upgrade you to panelist? Mr. Shubhadeep Sarkar. Ma'am, you may just call out the name of the 2-3 persons together and upgrade them simultaneously. Okay. Yeah. Dr. Bhupendra Singh Chauhan, Imperial College of Education, Hind. Dr. Bhupendra Singh Chauhan, Imperial College of Education, Gohad, District Bhind. Sir, are you there? Okay, Mr. Mano Ranjan Sahu from Odisha. Their names. So if anyone who is interested to give their feedback, they can raise their hand here itself. We will be unmuting them and we'll make the panelist. Okay, ma'am. Meanwhile, you do this. Let's not waste time. You can admit the participants and we can move further. And once the participants join, we can take the feedbacks. Dr. Pooja, can we continue, please? So I hereby invite Dr. Sanjay Kumar, Secretary General, CTEF Delhi Chapter, to give vote of thanks for the session. थैंक यू पूजा। ये मेरा जो फीडबैक सेशन है 2 पार्ट्स में रहेगा मैम। मेरा फर्स्ट पार्ट डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए, और सर सेकंड पार्ट जो भंडारकर सर ने इतनी सारी बातें की, सर मेरे कुछ सवाल भी हैं उन पर, तो मैं आपसे वो भी रखना चाहूँगा, क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म पर होते हैं, कई बार उन चीज़ों को रख सकते हैं आगे जाके, वो अच्छी चीज़ रहेगी। मैंने जितने भी ये फीडबैक्स थे या चैट बॉक्स में मैं देख रहा था, सभी को कॉपी पेस्ट किया सेपरेटली और एक कंक्लूजन निकाला। मुझे लगता है आपने 5 पॉइंट रेटिंग स्केल पर दिया होगा इन लोगों को। तो सबसे ज्यादा जो रिपीटेशन था वो था एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर पूजा, डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर रजनी गौतम, डॉक्टर मीना भंडारी मैम एंड प्रोफेसर तानिया गुप्ता मैम, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इतने सारे और इतने अच्छे रिमार्क्स अभी तक हमने जितने प्रोग्राम किए हैं ये सबसे ज्यादा है, मतलब डेली बेसिस पर ही इतने सारे। और इवन फोन कॉल्स बाद में भी जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता तो जो जैसे जानते हैं लोग, तो वो बहुत अच्छा रहा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने जो स्टार्टिंग की और जो स्टैटिस्टिक्स पार्टिसिपेंट्स का दिखाया आपने शुरू में, वो आज का वाव फैक्टर था आपका। मतलब नॉर्मली मैंने नहीं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं थी उसमें। वो जो स्टैटिस्टिक था कि कितने लोग पोजीशन वाइज की असिस्टेंट प्रोफेसर कितने, प्रोफेसर कितने, प्रिंसिपल्स, या स्टेट वाइज जो आपका वो था, ये मतलब एक थोड़ा सा हटके यूनिकनेस होनी चाहिए और एवरी टाइम हमें कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए उसमें। तो वो बहुत शानदार चीज थी और डेफिनेटली। और एक और चीज की आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसने हमारे CTEF दिल्ली NCR चैप्टर के साथ कोलैबोरेट करके और
जिस तरह के एफडीपीज सीटीएफ करता है तो उसको मानते हुए उसी फॉर्मेट में उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, तो उसके लिए जो वाइस चांसलर सर हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है यूनिवर्सिटी का वो वैल्यूज में आता है, और वो बहुत अच्छा लगा मुझे उस चीज के लिए। इसके अलावा सर अब मैं बात आता हूँ जो आपने आज टॉपिक डिस्कस किया, थोड़े कुछ क्वेश्चंस थे मेरे। एक मुझे नजर आता है इसमें कि नेक को लेके, नेक का आपने बात की, और आजकल सभी लोग नेक से परेशान भी हैं, पढ़ा कम रहे, नेक के पेपर वर्क में ज्यादा बिजी हैं, जो होंगे वो जानते हैं। नेक जैसे हम क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक वर्ड होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो नेक इंस्टीट्यूशनल डिफरेंस वो क्यों नहीं करता? वो कॉलेज जो टीचर एजुकेशन का दिल्ली में, एनसीआर में और एक बहुत रूरल एरिया में है, उनको सेम क्राइटेरिया पे मेजर करना, वो मुझे बड़ा डिफरेंट सा लगता है। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है पॉलिसी मेकर्स जो है कहीं ना कहीं इस बात को मिस कर रहे हैं। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वैसे इंस्टीट्यूशनल डिफरेंस भी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्टेशन यूजीसी केयर में पेपर के पब्लिकेशन की, जब दिल्ली एनसीआर वाले बड़े परेशान है उस चीज के लिए, तो एक रूरल इंटीरियर एरिया में जब बच्चे मुश्किल से पैदल पहुंचते, वहां के टीचर्स से ये एक्सपेक्ट करना और उस क्राइटेरिया पे मेजर करना और फिर दोनों इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करना, तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक पॉलिसी में गैप नजर आता है सर। इंस्टीट्यूशनल डिफरेंस भी कहीं ना कहीं पॉलिसीज में होना चाहिए। ई गवर्नेंस सर आ गया है मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन में, लेकिन अभी भी मोर देन 50% इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां पर ई गवर्नेंस नहीं है अभी भी, आज की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं। और रूरल एरिया में जाएंगे तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और डेफिनेटली जहां पर ई गवर्नेंस होगा वहां पर कहीं ना कहीं जो करप्शन की जब हम बात करते हैं, जहां से चीजें डिस्टर्ब होती हैं, तो वो काफी हद तक रिड्यूस होगा किसी भी लेवल पर। उसके बाद सर एक और चीज बात की थी आपने, ओनली कॉलेजेस को सर्टिफिकेट्स पर कॉलेजेस का नाम होना चाहिए। ये कहीं पर आपने मेंशन किया था कि जिससे वो क्वालिटी को ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करेंगे और फिर कंपटीशन भी होगा आपस में, कुछ ऐसा आपने बताया था। यहाँ पर थोड़ा सा मैं, मतलब आई रेस्पेक्ट यू, लेकिन आपके विचारों से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ। मैं थोड़ा सा इस तरह से मान के चलता हूँ कि क्वालिटी को हमेशा विद रेफरेंस टू कॉस्ट देखना चाहिए हमको। मैंने इंस्टीट्यूशंस को देखा, उन्होंने हार्डवर्क किया, क्वालिटी बनाई, ब्रांड नेम बने, और उसके बाद फिर एजुकेशन को वो सेल करना शुरू करते हैं। अगर आप उनकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो 85% जो एक्सपेंसेस है वो कहीं ना कहीं टीचर्स को मिलना चाहिए सीधा, डिफरेंट रिपोर्ट्स भी जो गवर्नमेंट की कहती है। लेकिन अगर आप उनकी बैलेंस शीट्स को देखेंगे तो हार्डली 20 to 25% जो मनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैकल्टी मेंबर्स में या टीचिंग स्टाफ में होता है। बाकी का कहाँ 65 जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके नाम पर। जबकि कोविड टाइम में 2 years में आपने देख लिया कि टीचर्स से, फैकल्टी से और जो लीडर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, हेड्स हैं, इनके अलावा बिल्डिंग्स कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती उस लेवल पे, उस प्रायोरिटी पे जितना लोग लेके चलते हैं उसको। और सर एक चीज और इसमें जो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा कि थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, कभी पायलट स्टडी कराइए इस पे कि ठीक है स्कूल्स की या कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, जब मैं क्वालिटी को विद रेफरेंस टू कॉस्ट देखता हूँ कि सेम क्वालिटी आप 10,000 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम क्वालिटी आप 8,000 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है छोड़ दीजिए, मार्कशीट पे किसी कॉलेज का नाम नहीं होगा, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम होगा आपकी मार्कशीट पे। आप किस कॉलेज से पढ़े उसका नाम ही नहीं होगा। फिर स्थिति देखिए आप यकीन मानेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हम इन महंगे कॉलेजेस में इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे की मार्कशीट पे उसका नाम होता है, जो वो प्रोफेशनली कहीं जाता है तो वो मैटर करता है। आप इसको रिमूव करा दीजिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम होगा, कॉलेज का नाम ही नहीं होगा। डेफिनेटली एक बार पायलट स्टडी करा के देखिए, जो कॉस्ट वाली प्रॉब्लम है ना सर, काफी हद तक सॉल्व मिलेगी, इवन इन द केस ऑफ कॉलेजेस, इवन स्कूल्स ऑल्सो। मतलब इसको ऐसा मैं सोचता हूं तो इस पे पायलट स्टडी हो और रिजल्ट्स आए तो ये ट्राई किया जा सकता है। और एक इसका सर जीता जागता जो एग्जांपल है केस स्टडी की मैं बात करूं, सीए और सीएस के कोर्सेज, आप सीए की भी मैं बात करूं, सबसे पॉपुलर कोर्स है। अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में एक भी कॉलेज नहीं है इसका, सिंपल एक इंस्टीट्यूट है। और वो किस फॉर्मेट में काम करता है सर, वो इंटर्नशिप या ट्रेनिंग प्लस कोचिंग या एजुकेशन कहीं से भी ले लीजिए, कोचिंग या एजुकेशन आप कहीं से भी ले लीजिए, कॉलेज की जरूरत नहीं है। और आपने देखा होगा कि सीए टॉप मोस्ट डिग्री है कॉमर्स की सर,
ये मैंने एग्जांपल दिया आपको केस स्टडी का कि कॉलेजेस एग्जिस्ट उतना नहीं करते बिल्डिंग की फॉर्म में जितना टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला गेम शुरू हो जाता है जब हम बाद में देखते हैं उस तरह की चीजों को। सेम चीज सर स्कूलों के साथ भी हो सकती है। आप सिर्फ रखिए मार्कशीट पर सीबीएसई बोर्ड का नाम, स्कूल के हटा दीजिए कि ये बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं सबके नाम हटा दीजिए, फिर कंपोजिशन ऑफ स्टूडेंट्स देखिए किस तरह से शिफ्ट होगी और स्कूल्स में बच्चों का जो डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ मार्कशीट से स्कूल का नाम हटाइए और कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैं क्वालिटी को तब मान के चलता हूँ जब क्वालिटी विद रेफरेंस टू कॉस्ट देखी जाए। अगर आप कॉस्ट को आइसोलेट करते हैं और फिर क्वालिटी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से फिर कहीं ना कहीं हम बायास्ड हो रहे हैं किसी ना किसी मामले में। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉलिसी मेकर्स में भी मैक्सिमम लोग, मेजोरिटी में वही बैठते हैं जो उस तरह के इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो उस तरह की चीजों को फिर वो पॉलिसी में आने ही नहीं देते आगे की। तो इस तरह के केस स्टडीज और एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि अगर हम उन्हें ट्राई करें तो डेफिनेटली कॉस्ट वाइज बेनिफिट होगा। क्योंकि एजुकेशन में सबसे बड़ा इशू किसी के भी सामने, वो किसी भी लेवल पे हो, कॉस्ट सबसे बड़ा इशू आ रहा है। टीचर्स के लिए सैलरी इश्यूज हमेशा है, लेकिन अगर हम एजुकेशन की कॉस्ट की बात करें तो वो एवरी टाइम इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये पॉलिसीज में कहीं भी नहीं आते और ना उस तरह की पॉलिसीज को मतलब ऊपर से पॉलिसीज आती है कि उस तरह की चीजों को एड्रेस करें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप जब उस तरह की कमेटीज में या उसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आप नेशनल लेवल पे काफी कमेटीज में होते हैं, तो सर प्लीज इस तरह की चीजों को जरूर एड्रेस कीजिएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही कहते हैं ना कि सोसाइटी सेंटर्ड इश्यूज हैं जो पॉलिसीज में होते ही नहीं है कभी। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ सर। जैसे नेक का भी हमने देखा, रूरल अर्बन में तो लगाते हैं। तो यही बात हमारी बाहर की विदेश की यूनिवर्सिटी और इंडियन यूनिवर्सिटी इसमें भी होती है। फिर हम कहते हैं कि 200 यूनिवर्सिटी आई, उसमें हमारी एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं। भाई वहाँ के क्राइटेरिया अलग है, हमारी क्वालिटी की क्राइटेरिया अलग है, क्योंकि हमारा समाज अलग है, हमारा देश अलग है, हमारी जरूरतें अलग है। तो इस बात को हम ध्यान नहीं रखते। वही चीज नैक के साथ भी होती है। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। मैं इंस्टीट्यूशन का केवल इसलिए कह रहा था कि कई कॉलेजेस मैंने देखा ऐसे है कि भाई यूनिवर्सिटी डिग्री दे रही है, बस हो गया, कैसे भी चलाओ तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी डिग्री दे रही है तो वो अच्छा कॉलेज है, उसकी डिग्री पर भी यूनिवर्सिटी का नाम है, हमारी डिग्री है उस पर भी यूनिवर्सिटी का नाम है, तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे भी कई इंस्टीट्यूशंस मैंने देखे, वहाँ के जो संचालक है उनके विचार मैंने सुने, चला रहे अपनी तकलीफ है, तो वो बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो विदेश में ट्रेंड है कुछ हद तक अपने यहाँ भी हो सकता है कि भाई ये डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन है और उसका यदि स्टेटस अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, समाज में उसका सम्मान है, तो उसको भी बड़ा सजग रहना होगा, उसको भी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहना होगा, अन्यथा वो खत्म हो जाएगा, इट विल नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। तो इस उद्देश्य से वो मुझे लगा था। बाकी जो आपने नैक की बात कही सही, बिल्कुल सही है। और जैसे आपने कहा कि इंस्टीट्यूशन का नाम ही हटा दीजिए, तो कुछ तो ऐसे है कि जैसे आईआईटी, अब आईआईटी का स्टैंप हो जाए तो उस आदमी को कहीं भी नौकरी मिल ही जाती है कि भाई आईआईटी का स्टूडेंट है। या फिर बेंगलोर का है साइंस का इंस्टीट्यूट जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो इस प्रकार की कई संस्थान हैं कि जो बड़ा उनका नाम है, तो उससे उनको काफी फायदा होता है, बच्चों का भी फायदा होता है। पर इन जनरल यदि बात करें तो मैं इस बात से सहमत हूं कि आप इंस्टीट्यूशन का नाम ही हटा दो बीच में से, खाली बोर्ड का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है, वही रखो, तो हो सकता है कि इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं सर। थैंक यू सर। I hereby invite Dr. Kalpana Dixit. Yeah, Dr. Pooja, it's a request to all the participants, since we are already over time, we've shooted 7 minutes over time. I'll request kindly please be brief because we have a formal vote of thanks as well. Thank you so much. So I hereby invite Dr. Kalpana Dixit to give her brief feedback on everything.
Yes. Dr. Kalpana Dixit, you can unmute yourself. Kindly Doctor- unmute yourself. डॉक्टर कल्पना जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने Yes, आप को. हाँ जी. Now, I have done. Am I audible now? हाँ जी, please Am I go ahead. audible? Yeah. I am Dr. Kalpana Dixit from Bhardarkar University, Bhopal. First of all, I would like to say a very, very much congratulations to Professor Dr. Tanya, Pooja, Rajni, and Meena Verma, and all the team of R.K. Mangalam University. You have done really excellent for 7 days. Then next, I would like to say my heartiest thanks to Professor Keshav Bhandarkar. He is from Regional Institute of Education, Bhopal. I think so. You have introduced him like that. I am also belonging to Regional Institute of Education, Bhopal. I have done my PhD under the guidance of Mrs. Avinash Grewal, Professor Grewal. And I have done many projects with Dr. B.K. Prasi in the UNESCO and UNICEF. So we all are connected and interconnected also. So I would like to highlight the feedback. All the 7 days, it was very much knowledgeable and extensive information was given by all the extremely speakers present here. They have done really good and they have prepared very well for this national level faculty development program. They have done excellent. So I would like to thank and congratulate to each and everyone. All the speakers were good. All the team coordination was very good and the platform was really very good. I would like to highlight only one thing, the time, because this is the university time, 9:30 to 5, it's a university time. So it is very much difficult for some people, those who are really going to college in offline classes. So they must have some problem, including me. But I am managed by your support and coordination. I have done sometime I would on my cell phone, sometime I am on at my laptop. So this happens in the professional development. When you go for a professional development, you have to manage and accommodate accordingly. So this is done, no issue. And again, I would like to say that if the R.K. Mangalam University will organize some offline program, I will be there as a keynote speaker. I really want to interact Thank you, with ma'am. you. Yeah, Thank you. I really, you are conducting a program on research. I am the expert of research at national and international level, being a Sure. global educator. So Thank I you would so like much. to yeah, Tina madam, Tanya, I will really like to associate with Thank you. you. Thank you, And madam. Sure. again, I would like to say my heartiest thanks to Dr. Sanjay Kumar, continuously being with us. He has really done a great job to moderate the session and to give expert feedback for all the speakers. And many times he has been coordinated very excellently. So I would like to thank you, Dr. Sanjay Kumar sir, also. And all the eminent delegates and participants of different institutions are present here. I am really happy to interact with you all. And Dr. Keshav, I would like to say you that we would like to launch a concept for teacher education at Madhya Pradesh, Bhopal also. Here many research scholars and many educators are present, those who belong to in the field of teacher education as well as regional institution of 4 the regional institutes and there. So if you permit or grant something, so we will definitely initiate our teacher education council at Madhya Pradesh, Bhopal also. Okay, sir. So Thank you, madam. then Ma'am, I will be in touch with you. Now Dr. Dixit, thank you. Thank you. We are, Yeah, thank you. Thank you I so don't much, want to each do and this. everyone. I'm sorry to stop you, but we are running short of time. Yes, Yeah, ma'am. thank Yes, you. please. Thank you so much for your wonderful feedback. Can we have the next participant? We'll request a 30 Yes, 30 I have- seconds I feedback, please. hereby invite Mrs. Shubhadev Sarkar for the brief feedback, please. Yes. Yeah, Thank you so Shubha much. Thank you, everyone. Each and everyone. Thank you so much. Am I audible, madam? Yes, please, sir. Go ahead. Okay, madam. Just a short, I will like to say because it is a video mode. So thank you, Dr. Tanya madam, Deepika madam, Rajni madam, and everyone. I am from Sikkim Skills University, West Bengal, and it is KR Mangalam University. It is very far from my place. But through video mode, it is just like a family interacting with everyone under a single roof. And for the single, not a short FDP, but the connection will be more. And
I hope so this university will again organize programs and like this video mode, everyone from different states will be interacting with us, and it will be a part of our family, because all we are teaching and all we are working in different places, but all states participants in a single roof under the guidance of K.R. Mangalam University, guidance of Dr. Tania Madam and Dr. Dipta Madam, Rajni Madam. Every one of you are guiding us, and so it is teaching is a learning process. So it is this FDP has taught us that we can go ahead with everything, though we may be in different states, but eagerness and interest is the most important part. Thank you, everyone. Thank you, sir, Dr. Sarkarji. Thank you so much. Can we have the last participant, Dr. Chauhanji? Sorry, ma'am. So, Supadeep, sir, you can open your camera. I will be clicking photo and sending to you because you were interested in photo shoot. So yes, heading towards the last candidate, Yes, you have ma'am. feedback. Yes, sir. So, Dr. Bhupendra Singh Chauhan, please go ahead and give your feedback towards the session, FDP. You can unmute yourself. Dr. Bhupendra Singh Chauhan, sir, please unmute yourself and give your free feedback. Yes, Dr. sir. Yeah. नमस्ते मैम। Namaskar, sir. हाँ मैम, जो ये एफटी का प्रेजेंटेशन हुआ ये बहुत अच्छा रहा। इसमें जो भी स्पीकर्स ने अपने विचार रखे वो बहुत इम्पोर्टेंट, नॉलेजफुल और आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो नए नए विचार हैं उनको रखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मैंने 7 डेज ये अटेंड किया है। इसमें जो भी जिन प्रोफेसर्स ने अपने विचार रखे हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक थे और बिल्कुल एकदम इस तरीके से विचार रखे गए थे कि इन विचारों के बाद शायद मैं समझता हूं और नए विचार नहीं हो सकते हैं। और जो भी स्पीकर्स ने जो अपने विचार दिए वो अपने आप में यूनिक थे, बहुत ज्ञानवर्धक थे और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने ऐसा एफटीपी कंडक्ट कराया जो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। इससे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। आज मैं इलाहाबाद आया हुआ था तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो मैंने मैम से पर्सनली फोन पे बात की तो आपने मुझे ऐड किया, मैं प्रेजेंट उसमें उपस्थित हो सका। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये प्लेटफॉर्म ऐसे मिलते रहते हैं, इससे ये ज्ञान के मेले में बहुत सारा ज्ञान अर्जित होता है, एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार डॉक्टर चौहान जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर पूजा, लेट्स कंक्लूड विद द फाइनल। यस, गुड आफ्टरनून पचौरी सर। सॉरी, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून मैम। प्रणाम सर, भंडारकर से प्रणाम। कैसे हैं सर? आपका प्रोग्राम सर बढ़िया। देखने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा सर ने तो बहुत अच्छे से प्राचीन से और वर्तमान तक ले आए हैं। थैंक यू। ज्ञानवर्धक जो सेशन था बहुत अच्छा रहा। और जो ये प्रोग्राम है संजय सर और तान्या मैडम ने 2 किनारों को ब्रिज के माध्यम से मिलाया है, शिक्षक को और शिक्षार्थियों को। अब हम जो फीडबैक में देख रहे हैं कि जो रिसोर्स पर्सन अरेंज किए संजय जी ने, तान्या मैडम ने, उस तरीके से उन्होंने जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं सभी को बड़े अच्छे से, जो एफडीपी का मतलब है वो सही साबित किया है। तो मैं संजय सर को, तान्या मैडम को, रजनी गौतम मैडम को, दीपिका मैडम, पूजा मैडम और भंडारी मैम, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि भाई इसी तरीके से आगे प्रोग्राम कराते रहें और उसमें अच्छे अच्छे और रिसोर्स पर्सन जुड़ेंगे, क्योंकि संजय सर का प्रयास रहता है कि अच्छे लोगों को आगे लेके आना है। तो वो फिल्टर बहुत जल्दी कर देते हैं और साइड भी बहुत जल्दी, किनारे भी बहुत जल्दी लगा देते हैं। भाई अब ठीक है, अब नया बंदा आ रहा है, उसे मौका मिलना चाहिए। तो इसमें सर का बड़ा अच्छा वो है, फिल्टर थ्योरी है, वो फिल्ट्रेशन थ्योरी लगा के अपना पूरा फिल्टर करके ले आते हैं और फिर आगे उसे मौका देते ही नहीं है, फिर चाहे कुछ भी हो।
तो ये अच्छी थ्योरी है सर की, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज आती है कि नई चीज कौन दे सकता है, जो लगातार उसमें अपने अध्ययन में जुड़ा हुआ है या अपने को अपडेटेड रख रहा है, वही दे सकता है। अदरवाइज पुरानी बातों को करके अपना समय पार करने से कोई फायदा नहीं है। तो अच्छा है सर, मैं उम्मीद रखता हूँ कि संजय सर आगे फिर नेक्स्ट प्रोग्राम कराएंगे किसी और यूनिवर्सिटी को कोलैबोरेशन के साथ। और सर को तहे दिल से धन्यवाद सर, प्रणाम। और मैं बीच में आया, सॉरी, आपको मैंने बिना उसके इजाजत के अपना माइक ऑन कर लिया और मैंने कहा मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने कहा मैं धन्यवाद ना दूं सर को तो मेरे लिए थोड़ा सा असहज लग रहा था कि मैंने सर को धन्यवाद नहीं दिया और सर आए, तो सर को धन्यवाद और सर प्रणाम अगेन। थैंक यू सो मच मैम। और बधाइयाँ सबको, सभी ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया है और बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं सर, मतलब इतने अच्छे फीडबैक आ रहे हैं कि उसमें एक्सीलेंट से नीचे कोई जा ही नहीं रहा है। थैंक यू मैम। So Thank you. now, thank you, sir. Thank you so much, Pachori sir. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Now I invite respected Dr. Meena Bhandari, IQAC Coordinator, Dean SBAS, KR Mangalam University, to give vote of thanks. Thank you, Dr. Pooja. Good afternoon, everyone. Honorable Chief Guest, Professor K.M. Bhandarkar, respected Dr. Satyendra Gupta, Dr. Sanjay Kumarji, Professor S.C. Pachori, Professor Tanya Gupta, conveners of FTP and faculty members. I, on behalf of Internal Quality Assurance Cell, School of Basic and Applied Sciences and School of Education, KR Mangalam University, offer my heartfelt gratitude and sincere thanks to esteemed Chief Guest, Professor K.M. Bhandarkar, National President's Council for Teacher Education Foundation. I am extremely thankful to him for accepting our invite. He touched upon an enormously important topic, effective governance and regulatory reform. This is a very pertinent topic which brings out reforms in education if understood and executed properly. Sir has beautifully illuminated and discussed various parameters associated with effective governance. Self-governance, culture of excellence, innovation is very, very important for an institute who want to attain good reputation. In the time to come, large changes are expected at regulatory mechanism level. We are thankful to Dr. Satyendra Gupta, Dr. Sanjay Kumarji, Professor S.C. Pachori, and most importantly, Council for Teacher Education Foundation, Delhi NCR chapter, for collaborating with us, providing us necessary support in terms of resource persons who enlightened us on numerous themes of national education policy. I owe my deep sense of gratitude to guest speakers, Professor C.V. Sharma, Dr. Amit Ahuja, Dr. Khushwinder Kumar, Dr. Preeti Chikara, Dr. Shweta Rani, Dr. Sanjay Kumar, Dr. Aarti Kaul Kachru, Dr. Archana, who deliberated on various topics which helped us to understand national education policy in a better perspective. I think this will enable us to execute it in an effective manner. I am grateful to leadership team and management of KR Mangalam University for providing and stimulating environment, motivation and cooperation to execute and accomplish this task. I am highly obliged to Professor Tanya Gupta for planning and implementing it methodically with perseverance, dedication and enthusiasm. I am thankful to the conveners of this FTP, Dr. Rajni Gautam, Dr. Pooja Verma, Ms. Deepika for taking up the responsibility of organizing this FDP. I am grateful that they showed their willingness to execute it and effectively and efficiently managed it well. So lots of thanks to you, ma'am. I am thankful to our IT team, fingers crossed, Mr. Dharamvir Bharti, Mr. Ashish for providing us technical support, because technical support in this online FTP matters a lot for all of us. I am also thankful to all the participants for their gracious presence and timely submission of the feedback. Hope the learning at this platform will pave for better execution of NEP 2020 and will enhance the reputation of our country in the world in terms of quality education. युवा पीढ़ी को इस काबिल बनाना कि वो जीवन भर अपने आप को प्रशिक्षित करती रहे, यही शिक्षा का असली उद्देश्य है. With these lines of Robert Menard, I bid farewell to you. आप लोगों के सहयोग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.
Thank you so much. Thank you, Dr. Meena Bhandari, ma'am. We are delighted to have you here on this platform. And sorry, Deepika, I missed your name. Thank you, Deepika, for the wonderful coordination. Thank you, each and everyone. In the end, I'd like to extend gratitude because you've thanked everyone, Dr. Bhandari, as Director IQAC. This could not have seen to its day till you had not planned this event. So gratitude from our behalf to you as Director IQAC. Thank you so much for spearheading the show. Thank you. Sir. So we have arrived at the end of this 1 week FDP on new reform in higher education with reference to NEP 2020. So we are here because of you. It was all your support. So I thank you. Pooja ma'am, can we take a group photograph? I think we can end the meeting, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Dr. Bhandarkar, sir, thank you. And Dr. Pachauri, sir, Dr. Satendra ji, Dr. Sanjay Kumar ji. Thank you. Namaskar, sir. Yeah. Thank you. So we are ending the session. Thank you.